गुड मॉर्निंग एंड वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 13। आज का टाइटल है न्यूक्लिक एसिड्स। सो न्यूक्लिक एसिड एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन बेसिस, शुगर्स एंड फॉस्फेट। इस नॉलेज से आपको ये फ़ायदा होगा कि नीट 2026 में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम सब कुछ कवर कर लेंगे और आप किसी भी क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इसे। इसमें प्यूरिन के दो एग्जाम्पल्स, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडीन्स के तीन एग्जाम्पल्स, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ये हम पढ़ेंगे। सो सबसे बेसिक डिफरेंस पिरिमिडीन एंड प्यूरिन में ये है कि ये सिंगल रिंग है एंड प्यूरिन टू रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन में एक रिंग पिरिमिडिन रिंग होगी एंड दूसरी इमिडाजोल रिंग। सो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखिए, इसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ये एरोमेटिक रिंग है, सो इसमें डबल बॉन्ड्स भी आपको दिखेंगे जो रेजोनेट होते रहते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आप इसकी वैलेंसी फुलफिल कर दीजिए। यहाँ H, another H and H over here. So this is the structure of pyrimidine. Numbering is very important. Numbering यहाँ से होती है. This is the first atom. This is second. This is third. This is fourth, fifth, and sixth. Now, how can I draw this structure in a little different, simplified way? This bend indicates carbon atom. ओके, आपको यहाँ कार्बन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बेंड से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कार्बन है। नाइट्रोजन को हमें शो करना पड़ता है। देन अगेन दिस देयर इज अ बेंड ओवर हियर, वन बेंड ओवर हियर। सो दीज बेंड्स indicate carbon atoms and show the double bonds, double bond. So this is the simplified representation of pyrimidine ring. अभी हम प्यूरीन बनाएंगे। सो प्यूरीन में एक पिरिमिडिन रिंग है, तो आपको यही रिंग यहाँ फिर से बनानी पड़ेगी। इमिडाजोल रिंग इज ओवर हियर and numbering is opposite in direction. So simple way to represent purine is, so wherever hydrogen is present, you have to show hydrogen only on nitrogen. This is understood that this carbon will have hydrogen attached to it. Okay, so this is the simple representation of pyrimidine ring and simple representation of purine ring. सो एडेनिन एंड ग्वानिन एक्चुअली सब्सटीट्यूटेड प्यूरीन होते हैं। जो बेसिक प्यूरीन स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा, उसमें आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ कुछ जगह पे न्यू फंक्शनल ग्रुप्स ऐड करते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को सब्सटीट्यूटेड प्यूरीन कहा जाता है। सिमिलरली यूरासिल, साइटोसिन, थाइमिन सब्सटीट्यूटेड पिरामिडीन्स हैं। बेसिक पिरामिडीन स्ट्रक्चर में एडिशनल फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एडेनिन दिया गया है एनसीईआरटी में। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन। इस पोजीशन में जो हाइड्रोजन है दैट इज रिप्लेस्ड बाय अमाइनो ग्रुप। इन guanine, first you draw the basic purine structure.
अब इस पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है ग्वानिन में। सो इस कीटोन ग्रुप में अभी ऑलरेडी 2 bonds हैं एंड 2 bonds आर हेयर, सो यू कैन नॉट हैव एडिशनल डबल बॉन्ड हेयर। सो दिस नाइट्रोजन एक्वायर्स 1 हाइड्रोजन एंड इस पोजीशन पे जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है वो हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप। So you can see the basic difference. NH2 is here in adenine. This is position number 6th. Okay. So you can call adenine as 6 amino purine. And here it is, amino is over here, the second position. And on 6th position, you have ketone group. So this is the difference between adenine and guanine. So based on this information, let's attempt this question. Purines found both in DNA and RNA are, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। सो प्यूरिन के दो ही एग्जाम्पल्स हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। इट इज़ इन ऑप्शन नंबर 2। अभी हम इन तीनों के स्ट्रक्चर समझेंगे। पहले मैं पिरिमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर सबका बना देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सब्सटीट्यूशंस शो करूँगी, सारे फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर पिरिमिडीन का। अब सब्सटीट्यूशंस कहाँ होते हैं? यूरेसिल का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है। आपको यहाँ दो कीटोन ग्रुप्स दिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बन चुके हैं, तो यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन डालना पड़ेगा एंड यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल। नाउ थाइमीन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली यूरेसिल जैसा ही होता है। बस यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया। तो स्ट्रक्चरली देखिए कितना सिमिलर है। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ से रटते हैं नाम से। तो जब आप स्ट्रक्चर से याद करेंगे ना किसी भी सब्जेक्ट को, तो बहुत आपको इजी हो जाएगा समझना कि ये दोनों रिलेटेड हैं और ये इनसे अलग होगा। अभी देखिए साइटोसिन में क्या अलग होता है, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप होगा एंड यहाँ पर कीटोन ग्रुप होता है। अब अमाइनो ग्रुप है तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड शो करना पड़ेगा एंड यहाँ NH लिखेंगे हम। सो साइटोसिन अलग है थाइमिन एंड यूरासिल से। देखिए जब एवोल्यूशन, हमने केमिकल एवोल्यूशन पढ़ा कि नाइट्रोजन बेसिस बने एंड उससे बाद में डीएनए एंड आरएनए का सिंथेसिस हुआ। आप ये भी समझिए कि सेल्स ने कितना ब्यूटीफुली मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से द सेम मॉलिक्यूल कैन बी यूज्ड इन डीएनए एंड आरएनए। ओके, so this is how the cells have evolved to judiciously use the resources available to them. अभी तक हमने नाइट्रोजन बेसिस अच्छे से डिटेल में कवर कर लिए, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन। नाउ वी विल लर्न शुगर्स, स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो, बट यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से समझ जाइए। राइबोस में C5 होता है ना, 5 कार्बन होते हैं, तो 5th कार्बन को हम ऐसे ऊपर को शो करते हैं। तो ये बेंड शो कर रहा है कि दिस इज 5th कार्बन। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड देन you will only have to show the OH group. OH is here, here, and over here, and here also there is OH. Okay, this is ribose. Deoxyribose में at the second position there is no oxygen. Okay, so you will show nothing here, only the bend. Show this hydroxyl group. There is no OH. Okay, and then OH is here,
and this is fifth carbon, and there is one OH2 fifth carbon. Okay, so this is deoxyribose, this is ribose. So normally we number the carbons as 1, 2, 3, 4, 5. Okay, but with respect to nucleic acids, you will have to number them with a prime symbol also. So this is 1 prime, this is 2 prime, this is 3 prime carbon, and this is 5 prime carbon. Similarly, this is 3 prime of ribose, this is 5 prime of ribose. Why are we using 5 prime and 3 prime? क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस में भी हमने नंबरिंग की है, तो उस बेसिस की नंबरिंग एंड इसकी नंबरिंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें प्राइम वर्ड यूज करना पड़ता है यहाँ पर. क्लियर? एंड इससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, इसलिए हम 5 प्राइम एंड बोलते हैं इसको. एंड यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, ये 3 प्राइम एंड है, ये ग्रोइंग एंड होता है चेन का. तो जब हम पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से ग्रोथ होती है न्यूक्लिक एसिड्स की. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड्स में नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू शुगर वाया एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज. सो दिस लिंकेज इज एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज. अब मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कैसा है ये. तो पहले प्यूरिन एंड राइबोस हम बनाते हैं. देखिए, ये है राइबोस, फिफ्थ कार्बन, OH, OH, OH. This is OH, right? Now purines, you will have to turn the purine. Okay, so far I was drawing the pyrimidine first and then the imidazole ring. यहाँ पर अभी आपको पहले imidazole ring शो करनी पड़ेगी. उसका रीजन मैं बताती हूँ आपको. There is one nitrogen here. Nitrogen. So double bond here, double bond here. This is, let's say, this is adenine. So there will be an H2 group, double bond and double bond. Okay. So if you draw it in the regular way, what will happen? There will be steric hindrance. Okay. जब भी steric hindrance होता है, यहाँ पर collision होंगे rings के, तो उससे क्या होगा? वो thermodynamically unstable हो जाता है molecule. So when the rings are they are apart from each other, then the molecule is thermodynamically stable. Okay, so this conformation is called anti. अगर ये ऐसे आप फ्लिप कर देंगे, पहले पिरिमिडीन रिंग बनाएंगे एंड फिर इमिडाजोल रिंग, तो वो कॉन्फर्मेशन सिस कॉन्फर्मेशन कहलाता है. अभी ये एंटी कॉन्फर्मेशन है एंड एंटी कॉन्फर्मेशन इज स्टेबल कॉन्फिगरेशन. एंड नाउ व्हाट विल हैपन? देयर विल बी, ये दोनों कंडेंस होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. Okay, so this is the structure of nucleoside, and specifically this is adenosine. Adenine plus sugar, ribose sugar, adenosine. And what about pyrimidine? Let's say, let me draw the sugar first.
So ribose है तो let me draw uracil here. There will be one oxygen. Okay, double bond over here, hydrogen over here. This hydrogen is used in the is eliminated as water. Okay, so where is the N glycosidic linkage? It is between the nitrogenous base and the sugar. This bond is N glycosidic bond. This is the bond, N glycosidic bond. And what about numbering? Remember the numbering. In case of purine, numbering will begin from here. This is 1, 2, this is 3, 4, 5, 6, then this is 7, this is 8, this is 9. And in case of pyrimidine, this is the element number 1, atom 1, then 2, then 3, 4, 5, 6. So purine is attached to ribose sugar via N9 and pyrimidine is attached to ribose via N1. This will be 3 prime 5 prime to distinguish the numbering with the nitrogen base, 3 prime and 5 prime. This information is too much, but you will have to take time. Okay, don't try to swallow this in one day, and you will have to go through this again and again. And once you get a hold on this will really help you in clearing a lot of questions. So I'm sure if you are a genuine, authentic science student, you will learn this and you will not see as an overload of information. Now these are the names of nucleosides. In RNA, we have adenosine. Adenine plus sugar becomes adenosine. Uracil plus sugar becomes uridine. Cytosine plus sugar is cytidine. And guanine plus sugar is guanosine. Here you will have to use the prefix deoxy. Thymine becomes thymidine. Keep revising this, okay? And till you by heart every detail without making any mistakes. Now the last one is nucleotides. So in nucleotides, you have the nucleoside is linked to a phosphate group. So this is the nucleoside and this is the phosphate group. So quickly I will show you only this part, the phosphate group part. See, the ribose sugar, I'm just writing adenine here. This is ribose. This is the fifth carbon. The OH, and this is the phosphate group. So it has OH and this also is OH. So H2O will be removed and these two will be connected. Okay. Then you have O minus, then another oxygen. So this is one monophosphate. If there are other diphosphate and triphosphate, you will have to show a high energy phosphoryl bond, then another high energy phosphoryl bond. Okay. If it is adenosine monophosphate, it will be called adenylic acid. Same way, UMP, uridine monophosphate is uridylic acid, cytidylic acid, and guanylic acid. And here you will have to use the prefix deoxy. Okay, this question is from re-exam 2024. Which of the following is a nucleotide? So this one is nucleotide. Uridine is uracil plus sugar. Guanine is only the purine, the nitrogen base.
Guanosine is guanine plus sugar. This question is from NEET 2025. Adenosine is nucleoside. Adenylic acid is nucleotide. Adenine is nitrogen base. Alanine is amino acid. So the answer will be option number 3. So nucleic acids, these are polynucleotide. For nucleic acid, the building block is a nucleotide. So many nucleotide, polynucleotide, they are connected to each other via phosphodiester bond. So let's understand what is that bond. So देखिए, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस में आपको ट्राइफॉस्फेट्स की ज़रूरत होती है. यहाँ पर जो हाई एनर्जी फॉस्फोरिल बॉन्ड है, ये जब ब्रेक होगा तो इसकी जो एनर्जी रिलीज होगी वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होती है. सो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ये फॉस्फेट के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे वाया द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. Then a new nucleotide will come. Again, these two will break and the energy released will be used in bond formation. So, this is how the nucleotides, this is one nucleotide, another nucleotide, another nucleotide. So, number of nucleotides will be connected via phosphodiester bond back to back. And this forms the backbone. So, that's all about nucleic acid. Thank you so much for watching my video and take care of yourself.